सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपैरेटिव एग्जाम्स। तो चलो मैं इंद्राज कुमार आपके साथ तो शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा? एसएससी सीजीएल टीआरआई सीबीई एग्जाम 2016। ऑप्शंस है ए म्यांमार, बी चाइना, सी जापान, डी नॉर्थ कोरिया। आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन 2, which countries were Buddha's idols disfigured and removed? एसएससी 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एलसीडी एग्जाम 2011। ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी टर्की, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन 3, which gods are worshipped in the sanctum of Badrinath and Kedarnath temples respectively? एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी एग्जाम 2010। ऑप्शंस है ए विष्णु एंड शिवा, बी शिवा एंड विष्णु, सी शिवा एंड पार्वती, डी विष्णु एंड ब्रह्मा। आंसर है विष्णु एंड शिवा। क्वेश्चन 4, who amidst the great music composers was the ruler of a state? एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम एग्जाम 2002। ऑप्शंस है ए त्यागराजा, बी श्यामा शास्त्री, सी मुथुस्वामी दीक्षितार, डी स्वाति थिरुनल। आंसर है स्वाति थिरुनल। क्वेश्चन 5, who among the first cabinet of independent India was responsible for mass religious conversion? एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 1997। ऑप्शंस है ए DRSP मुखर्जी, बी डॉक्टर जॉन मथाई, सी सरदार बलदेव सिंह, डी डॉक्टर BR अंबेडकर। आंसर है डॉक्टर BR अंबेडकर। क्वेश्चन 6, गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय एसएससी CHSL 10+2 टीआरआई सीबीई एग्जाम 2017। ऑप्शंस है ए फ्रैंक लॉयड राइट, बी जॉर्ज बिटेट, सी फ्रैंक गहरी, डी जहां हादिद। आंसर है जॉर्ज बिटेट। क्वेश्चन 7, हु बिल्ट शांति निकेतन? एसएससी CHSL 10+2 टीआरआई सीबीई एग्जाम 2017। ऑप्शंस है ए गुरु रामदास, बी महाराजा प्रताप सिंह, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ब्रिटिश गवर्नमेंट। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 8, द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वॉट इन कैम्बोडिया वॉज बिल्ट बाय एसएससी CGL टीआरआई सीबीई एग्जाम 2016। ऑप्शंस है ए श्रुतावर्मन, बी सूर्यवर्मन II, सी इंद्रवर्मन, डी अनिरुद्ध। आंसर है सूर्यवर्मन II। क्वेश्चन 9, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान? एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीआरआई एग्जाम 2013। ऑप्शंस है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी फजलुल हक, सी लाइक्वाट अली खान, डी चौधरी रहमत अली। आंसर है चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन 10, नेम द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी हु कॉन्कर्ड द सिंध? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 2013। ऑप्शंस है ए अल हाजास, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी लॉर्डन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कसिम। आंसर है मोहम्मद बिन कसिम। क्वेश्चन 11,
Name the Pakistan Prime Minister who signed the Simla Agreement in 1972. SSC Graduate Level Tier I Exam 2012. Options है A. Ayub Khan, B. Yahya Khan, C. Zede Bhutto, D. Benazir Bhutto. आंसर है Zede Bhutto. Question 12. The first woman governor of a state in free India was SSC 10+2 Level Data Entry Operator LCD Exam 2011. Options है A. Mrs. Sarojini Naidu, B. Mrs. Sucheta Kriplani, C. Mrs. Indira Gandhi, D. Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit. आंसर है Mrs. Sarojini Naidu. Question 13. The Indian monument recently inscribed in the UNESCO's World Heritage List is SSC Multitasking, Non-Technical, Staff Exam 2011. Options है A. Jantar Mantar of Ujjain, B. Jantar Mantar of Varanasi, C. Jantar Mantar of Delhi, D. Jantar Mantar of Jaipur. आंसर है जंतर मंतर ऑफ जयपुर. क्वेश्चन 14. Who discovered sea route to India via the Cape of Good Hope? SSC Multitasking, Non-Technical, Staff Exam 2011. Options है A. Vasco da Gama, B. Aman Sen, C. Christopher Columbus, D. John Cabot. आंसर है वास्को दा गामा. क्वेश्चन 15. Who propounded the Panchashil principles? SSC Multitasking, Non-Technical, Staff Exam 2011. Options है क्वेश्चन 15. Who propounded the Panchashil principles? SSC Multitasking, Non-Technical, Staff Exam 2011. Options है A. महात्मा गांधी, B. लॉर्ड बुद्धा, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, D. स्वामी दयानंद सरस्वती. आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन 16. In Afghanistan, two towering Buddha statues were destroyed at SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002 Re-Exam. Options है A. कंदेहर, B. याकाओलों, C. बमिया, D. मज़ार-ए शरीफ. आंसर है बमिया. क्वेश्चन 17. After independence, Hyderabad, the state of Nizam, was taken over by the Indian government through SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002. Options है A. Police action, B. Military action, C. Persuasion, D. Negotiations. आंसर है Military action. Question 18. Which country offered its good office to resolve Indo-Pak conflict peacefully in the year 1966? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002. Options है A. USA, B. Britain, C. USSR, D. Japan. आंसर है USSR. Question 19. The potato crop was introduced in India by the SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002. Options है A. British, B. Dutch, C. Portuguese, D. French. आंसर है Portuguese. Question 20. Who is the creator of the piece titled Portrait of Francois? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002. Options है A. Leonardo da Vinci, B. Paul Cézanne, C. Pablo Picasso,
डी एच रेम्ब्रांड। आंसर है पाब्लो पिकासो। क्वेश्चन 21। What is the name of the era on which the national calendar of India is based? SSC Combined Matric Level 3 Exam 1999। Options है A. Vikram Era, B. Kali Era, C. Saka Era, D. None of above। Answer है Saka Era। Question 22। The methods of democratic socialism are SCI Assistant Grade 2 Exam 2012 Paper I। Options है A. Revolution, B. General Strike, C. Sabotage, D. Persuasion and Propaganda। Answer है Persuasion and Propaganda। Question 23। Who gave the concept of total revolution? SSC CPO Sub Inspector Exam 2008। Options है A. जयप्रकाश नारायण, B. महात्मा गांधी, C. कार्ल मार्क्स, D. लेनिन। आंसर है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 24। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वॉज SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 2008। ऑप्शंस है A. जनरल K.S. थिमैया, B. जनरल K.M. करियप्पा, C. SHFJ मानेकशॉ, D. None of the above। आंसर है जनरल K.M. करियप्पा। क्वेश्चन 25। The first woman to become a chief minister of any state in India was SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2007। ऑप्शंस है A. नंदिनी सतपथी, B. डॉक्टर J. जयललिता, C. सुचेता कृपालनी, D. मिस मायावती। आंसर है सुचेता कृपालनी। क्वेश्चन 26। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज SSC टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज, एग्जाम 2007। ऑप्शंस है A. K.M. कार्यप्पा, B. गोपालस्वामी अयंगर, C. बलदेव सिंह, D. सरदार पटेल। आंसर है बलदेव सिंह। क्वेश्चन 27। When is Pakistan Independence Day celebrated? SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2005। Options है A. 15 अगस्त, B. 4 जुलाई, C. 16 अगस्त, D. 14 अगस्त। आंसर है 14 अगस्त। क्वेश्चन 28। The film Mangal Pandey released in August 2005 deals with SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2005। ऑप्शंस है A. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, B. नेताजी सुभाष बोसे's fight against British occupation of India, C. The First War of Indian Independence in 1857, D. The Partition of India and Pakistan। आंसर है नेताजी सुभाष बोसे's fight against British occupation of India। क्वेश्चन 29। Who was the town planner of Chandigarh? SSC Statistical Investigators Grade 4 Exam 2005। Options है A. Edward Lutyens, B. Charles Correa, C. Le Corbusier, D. Christopher Wren। आंसर है Le Corbusier। क्वेश्चन 30। Where was Tanjoi brocade developed? SSC Section Officer Audit Exam 2005। ऑप्शंस है A. वाराणसी, B. ढाका, C. सूरत, D. तंजावुर। आंसर है वाराणसी। क्वेश्चन 31। Who was the architect of North and South blocks of the Central Secretariat in Delhi? SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2004। ऑप्शंस है A. Sir Edward Lutyens, B. Herbert Bakers, C. Robert Tour Tussell, D. Antonin Raymond। आंसर है Sir Edward Lutyens। क्वेश्चन 32। Where are the mortal remains of Saint Francis Xavier housed? SSC Section Officer Audit Exam 2001। ऑप्शंस है A. वेलंकन्नी चेन्नई, B. से कैथेड्रल
Velha, Goa. C. Basilica of Bom Jesus, Velha, Goa. D. St. Xavier's Church, Mumbai. आंसर है Basilica of Bom Jesus, Velha, Goa. Question 33. The Bandung Conference was a major milestone in the history of SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2000. Options है A. The Non-Aligned Movement. B. Indo-Chinese Relationship. C. US-Vietnam War. D. Creation of ASEAN. आंसर है The Non-Aligned Movement. Question 34. Who controlled maximum trade in the western coastal region during 17th century? SSC Section Officer, Audit, Exam 2003. Options है A. Portuguese. B. Dutch. C. The House of Jagat Seth. D. Mullah Abdul Ghaffar. आंसर है Portuguese. Question 36. Which European colonizers did not have a settlement on the eastern coast of India? SSC Section Officer, Commercial Audit, Exam 2003. Options है A. French. B. Portuguese. C. Dutch. D. Danish. आंसर है Danish. Question 37. Which pairs contributed significantly to integrate the princely states into Indian Union? SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2002, SSC FCI Assistant Grade 3 Exam 2012, SSC CGL Tier I, CBE Exam 2016. Options है A. Sardar Patel and Jawaharlal Nehru. B. Sardar Patel and VP Menon. C. Sardar Patel and Mahatma Gandhi. D. Sardar Patel and K.M. Munshi. आंसर है सरदार पटेल एंड वीपी मेनन. Question 38. In which systems of land settlement adopted by the English did provide more protection to the interests of farmers? SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2002. Options है A. Permanent Settlement of Bengal. B. Ryotwari Settlement of Madras. C. Zmindari Settlement of Central States. D. Malguzari Land Revenue Settlement of United States. आंसर है Ryotwari Settlement of Madras. Question 39. Which libraries have the largest collection of manuscripts of historical value? SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2002. Options है A. Khuda Bakhsh Oriental Public Library. B. Tanjavur Maharaja Sarfoji Saraswati Mahal Library. C. Asiatic Society Library. D. Rampur Raza Library. आंसर है खुदा बख्श Oriental Public Library. Question 40. In which movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? SSC Combined Graduate Level Prelim Exam 2000. Options है A. Non-Cooperation Movement 1920 से 22. B. रोलाट सत्याग्रह 1919. C. अहमदाबाद स्ट्राइक 1918. D. बारडोली सत्याग्रह. आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक 1918. Question 41. When Mahatma Gandhi was arrested, who among took over the leadership of Salt Satyagraha? SSC Section Officer, Audit, Exam 1997. Options है A. विनोबा भावे. B. सरदार वल्लभ भाई पटेल. C. अब्बास त्यागजी. D. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. आंसर है अब्बास त्यागजी. Question 42. In which years 26 January was celebrated as an Independence Day? SSC CPO Sub Inspector Exam 2005. Options है A. 1930. B. 1929. C. 1942. D. 1946. आंसर है 1930. Question 43. Which treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Baji Rao II? SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2004. Options है A. The Treaty of Purandhar. B. Convention of Vadgar.
C. Treaty of Bassi. D. Treaty of Salbai. आंसर है Treaty of Bassi. Question 44. Which events made the English East India Company the legitimate masters of the Bengal Suba? SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2004. Options है A. Battle of Buxar 1764. B. Battle of Plassey 1757. C. Farrukh Siyar's famine 1717. D. Ibrahim Khan's famine 1690. आंसर है बैटल ऑफ बक्सर 1764. Question 45. From which Upanishads the words Satyamev Jayate inscribed in Devanagari script below the abacus of the state emblem are? SSC CPO Sub Inspector Exam 2006. Options है A. प्रश्ना, B. मुंडका, C. मंदुक्य, D. ईश्वस्या. आंसर है मुंडका. Question 46. Who among visited Gandhiji in South Africa? SSC CPO Sub Inspector Exam 2006. Options है A. B. G. तिलक, B. वल्लभ भाई पटेल, C. G. K. गोखले, D. J. N. नेहरू. आंसर है G. K. गोखले. Question 47. Which statements best explains the nature of revolt of 1857? SSC Statistical Investigators Grade 4 Exam 2006. Options है A. The last effort of the old political order to regain power. B. Mutiny of a section of sepoys of the British Army. C. A struggle of the common people to overthrow common rule. D. An effort to establish a limited Indian nation. आंसर है the last effort of the old political order to regain power. Question 48. Who made it possible for the Indians to enter the Indian civil service through an open competitive examination? SSC Section Officer, Audit, Exam 2008. Options है A. William Bentinck, B. Dalhousie, C. Mayo, D. Ripon. आंसर है Dalhousie. Question 49. Which was established by B. R. Ambedkar? SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2007. Options है A. स्वराज पार्टी, B. समाज समता पार्टी, C. All India Scheduled Castes Federation, D. The Independent Labour Party. आंसर है All India Scheduled Castes Federation. Question 50. Which one was not a French settlement in India? SSC Section Officer, Audit, Exam 2006. Options है A. Puducherry, B. Mahe, C. Goa, D. Chandarnagar. आंसर है Goa. Question 51. Where did Mahatma Gandhi return to India in January 1915? SSC CGL TRI CB Exam 2017. Options है A. South Africa, B. England, C. USA, D. Russia. आंसर है South Africa. Question 52. When did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? SSC SAS Exam 2010 पेपर आई. ऑप्शंस है A. जनवरी 1915, B. जनवरी 1951, C. जून 1917, D. जुलाई 1919. आंसर है जनवरी 1915. क्वेश्चन 53. Who was the first to sign the instruments of accession? SSC SAS Exam 2010 पेपर आई. ऑप्शंस है A. द महाराजा ऑफ बड़ौदा, B. द देवान ऑफ ट्रावेनकोर, C. द निजाम ऑफ हैदराबाद, D. द राजा ऑफ जोधपुर. आंसर है द देवान ऑफ ट्रावेनकोर. क्वेश्चन 54. Which according to Mahatma Gandhi is the strongest force in the world? SSC Tax Assistant, Income Tax Central Excise, Exam 2009. Options है
A. Non-violence of the brave. B. Non-violence of the weak. C. Non-violence of the coward. D. Non-violence of the downtrodden. आंसर है non-violence of the brave. Question 55. Which reform movements was the first to be started in the 19th century? SSC Section Officer Audit Exam 2008. Options है A. प्रार्थना समाज, B. ब्रह्मो समाज, C. आर्या समाज, D. रामा कृष्णा मिशन. आंसर है ब्रह्मो समाज. Question 56. Who wrote the famous poem सरफरोशी की तमन्ना? SSC CAPF ASI Delhi Police C Online Exam 2017. Options है A. बिस्मिल अजीमाबादी, B. चंद्रा शेखर आजाद, C. अशफाकुल्ला खान, D. राम प्रसाद बिस्मिल. आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी. Question 57. Who played an important role in Gadar movement? SSC CAPF ASI Delhi Police C Exam 2017. Options है A. श्यामीजी कृष्णा वर्मा, B. लाला हरदयाल, C. बिपिन चंद्रा पाल, D. विष्णु गणेश पिंगल. आंसर है लाला हरदयाल. Question 58. Which newspaper was started by Bal Gangadhar Tilak? SSC Stenographer Grade CD Exam 2017. Options है A. केसरी, B. The Hindu, C. The Statesman, D. The Tribune. आंसर है केसरी. Question 59. Where was Mahatma Gandhi organized Satyagraha for cotton mill workers? SSC CGL TRI CB Exam 2017. Options है A. मद्रास, C. सूरत, B. बॉम्बे, D. अहमदाबाद. आंसर है अहमदाबाद. Question 60. In which places was the Ryotwari settlement introduced? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2000. Options है A. उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, B. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, C. मद्रास एंड बॉम्बे, D. बंगाल एंड बिहार. आंसर है मद्रास एंड बॉम्बे. Question 61. Who is popularly known as Periyar? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2000. Options है A. C.V. रमन पिल्लई, B. C.N. मुदलियार, C. E.V. रामास्वामी नेकर, D. L. रामकृष्णा पिल्लई. आंसर है E.V. रामास्वामी नेकर. Question 62. Who founded the All India Depressed Classes Federation in 1920? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2000. Options है A. M.K. गांधी, B. ज्योतिबा फुले, C. G.K. गोखले, D. B.R. अम्बेडकर. आंसर है B.R. अम्बेडकर. Question 63. Which was the first English ship that came to India? SSC CPO CSI Intelligence Officer Exam 2011 पेपर आई. Options है A. Elizabeth, B. Bengal, C. Red Dragon, D. Mayflower. आंसर है Red Dragon. Question 64. Who did British persons admit the revolt of 1857 as a national revolt? SSC Combined Graduate Level TRI Exam 2011. Options है A. Lord Dalhousie, B. Lord Canning, C. Lord Ellenborough, D. Disraeli. आंसर है Disraeli. Question 65. Who was the pioneer of social reform movements in 19th century India? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2000. Options है A. औरोबिंदो घोष, B. राजा राम मोहन रॉय, C. देवेंद्र नाथ टैगोर, D. केशव चंद्रा सेन. आंसर है राजा राम मोहन रॉय. Question 66. Who has been known as the Frontier Gandhi?
एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल प्री एग्जाम 2000। ऑप्शंस है ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी खान साहिब, सी चौधरी शौकतुल्ला, डी लाइकवॉट अली खान। आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन 67। Who was famous for framing the education minute? SSC combined matric level pre-exam 2000. Options है A. Lord Elgin, B. Lord Macaulay, C. Sadler, D. None of these. Answer है Lord Macaulay. Question 68. Who abolished the dual system of government in Bengal? SSC combined matric level pre-exam 2000. Options है A. Lord Clive, B. Lord Cornwallis, C. Spencer, D. Lord Warren Hastings. Answer है Lord Warren Hastings. Question 69. Which authorized the British government to imprison any person without trial and conviction in a court of law? SSC combined matric level pre-exam 2000. Options है A. Rollat Act of 1999, B. Government of India Act of 1935, C. Indian Councils Act of 1909, D. Government of India Act of 1919. Answer है Rollat Act of 1999. Question 70. Who Governor General introduced the policy of doctrine of lapse during the British administration? SSC Stenographer Grade CD Exam 2017. Options है A. Lord Cornwallis, B. Lord Hastings, C. Lord William Bentinck, D. Lord Dalhousie. Answer है Lord Dalhousie. Question 71. What is the full form of IPL? Options है A. Indian Premier League, B. Indo-Pakistan League, C. International Premier League, D. Indian Players League. Answer है Indian Premier League. Question 72. Who among the following women cricketers was the first who has scored 10,000 runs in international cricket format? Options है A. Mithali Raj, B. Anjum Chopra, C. Charlotte Edwards, D. Elise Parry. Answer है Charlotte Edwards. Question 73. Who has become the first Indian fencer to qualify for Tokyo Olympic Games? Options है A. Kavita Devi, B. Bhavani Devi, C. Daina Devi, D. Kaushik Vedika. Answer है Bhavani Devi. Question 74. Which of the following football club wins FIFA Club World Cup 2020? Options है A. Juventus FC, B. FC Barcelona, C. Manchester United, D. Bayern Munich. Answer है Bayern Munich. Question 75. The term dolphin kick is associated with which of the following games? Options है A. Badminton, B. Squash, C. Swimming, D. Golf. Answer है Swimming. Question 76. Who attended all the 3 round table conferences? SSC combined Monday level pre-exam 2001. Options है A. Jawaharlal Nehru, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Vallabhbhai Patel, D. Dr. Rajendra Prasad. Answer है Dr. B.R. Ambedkar. Question 77. Who benefited most by the British revenue system in India? SSC combined matric level pre-exam 2000. Options है A. Sharecroppers, B. Peasants, C. Zamindars, D. Agricultural labor. Answer है Zamindars. Question 78. Who was the founder of the Arya Mahila Samaj in the early 1880s? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018. Options है A. Swami Dayananda Saraswati, B. Swami Vivekananda, C. Ramabai Ranade, D. Pandita Ramabai. Answer है Pandita Ramabai.
Question 79. When was Swaraj Party formed? SSC Combined Matric Level Pre-Exam 2008. Options है A 1 जनवरी 1920, B 1 जुलाई 1923, C 1 जून 1932, D 1 जनवरी 1923। आंसर है 1 जनवरी 1923। क्वेश्चन 80. Who did form the Swaraj Party? SSC Combined Matric Level Pre-Exam 2008. Options है A चित्तरंजन दास, B मोतीलाल नेहरू, C महात्मा गांधी, D A and B। आंसर है A and B। क्वेश्चन 81. Who was the founder of the Dravida Kazhagam? SSC 10+2 Level Data Entry Operator LDC Exam 2011। ऑप्शंस है A पेरियार ईवी रामस्वामी नेकर, B आचार्य विनोबा भावे, C राजगोपालाचारी, D महात्मा गांधी। आंसर है पेरियार ईवी रामस्वामी नेकर। क्वेश्चन 82. Which states was forced to merge itself with the Union of India after 1947? SSC Combined Matric Level Pre-Exam 2002 Re-Exam। ऑप्शंस है A हैदराबाद, B कश्मीर, C पटियाला, D मैसूर। आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन 83. Which was the precursor of Indian National Congress? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018। ऑप्शंस है A Servants of Indian Society, B Indian Association, C Indian National Union, D Indian League। आंसर है Indian Association। क्वेश्चन 84. Who revolutionaries were executed by the British? SSC Multitasking Non-Technical Staff Exam 2011। ऑप्शंस है A जतिन दास, B चंद्रशेखर आजाद, C राजगुरु, D कल्पना दत्त। आंसर है राजगुरु। क्वेश्चन 85. According to the Treaty of Srirangapatnam, which was ceded to the British? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018। ऑप्शंस है A मैसूर, B हम्पी, C कन्नूर, D मलाबार। आंसर है मलाबार। क्वेश्चन 86. The first session of Constituent Assembly of India was held in which city? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018। ऑप्शंस है A बॉम्बे, B मद्रास, C कैलकाटा, D दिल्ली। आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन 87. खिलाफत मूवमेंट was connected with SSC CGL TRI CBE एग्जाम 2016। ऑप्शंस है A टर्की, B इजिप्ट, C सऊदी अरेबिया, D ईरान। आंसर है टर्की। क्वेश्चन 88. Who is known as the father of the Indian Renaissance? SSC Multitasking Staff Exam 2013। ऑप्शंस है A राजा राम मोहन रॉय, B रविंद्रनाथ टैगोर, C स्वामी दयानंद सरस्वती, D स्वामी विवेकानंद। आंसर है राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 89. Which movements was not led by Mahatma Gandhi? SSC Multitasking Staff Exam 2013। ऑप्शंस है A क्विट इंडिया मूवमेंट, B स्वदेशी मूवमेंट, C नो कॉपरेशन मूवमेंट, D सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन 90. Which princely states did not accede to the Indian Union after independence? SSC CGL TRI CBE एग्जाम 2016। ऑप्शंस है A हैदराबाद, B जूनागढ़, C कश्मीर, D जोधपुर। आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन 92. Who viceroys became a victim of one of the convicts during his visit to the Andamans?
SSC FCI Assistant Grade 3 Exam 2012. ऑप्शंस है A. Curzon, B. Mayo, C. Ripon, D. Lytton. आंसर है Mayo. क्वेश्चन 93. Which chaired first round table conference? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018. ऑप्शंस है A. Clement Attlee, B. Winston Churchill, C. Stanley Baldwin, D. Ramsay MacDonald. आंसर है Ramsay MacDonald. क्वेश्चन 94. Mountbatten Plan, June 1947, provided for a referendum in which province? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018. ऑप्शंस है A. सिंध, B. पंजाब, C. बलूचिस्तान, D. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. आंसर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. क्वेश्चन 95. Who participated in the Salt Satyagraha of Gandhiji? SSC Junior Engineer Civil Exam 2018. ऑप्शंस है A. सरोजिनी नायडू, B. राजकुमारी अमृत कौर, C. कमला देवी चट्टोपाध्याय, D. All options are correct. आंसर है all options are correct. क्वेश्चन 96. Which place was the headquarters of the Portuguese in India? SSC Stenographer Grade CD Exam 2010. ऑप्शंस है A. कोची, B. गोवा, C. कैलीकट, D. कैनानो. आंसर है गोवा. क्वेश्चन 97. Who Portuguese captured Goa? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2002. ऑप्शंस है A. फ्रांसिस्को डी एल्माइडा, B. अल्फोंसो डी एल्बकर्की, C. वास्को दा गामा, D. रॉबर्टो डी नोबेल. आंसर है अल्फोंसो डी एल्बकर्की. क्वेश्चन 98. Which movements were not led by Mahatma Gandhi? SSC Combined Matric Level 3 Exam 2000. ऑप्शंस है A. चंपारण सत्याग्रह, B. वहाबी मूवमेंट, C. नो कॉपरेशन मूवमेंट, D. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आंसर है वहाबी मूवमेंट. क्वेश्चन 99. Who is the founder of the Azad Hind Fauj? SSC CGL Tier I री एग्जाम 2013-2014. ऑप्शंस है A. लाला हरदयाल, B. सुभाष चंद्र बोस, C. वीर सावरकर, D. चंद्रशेखर आजाद. आंसर है सुभाष चंद्र बोस. क्वेश्चन 100. Who organized the All India Depressed Classes Association in colonial India? SSC Multitasking Non-Tech Dot. Staff Exam 2014. ऑप्शंस है A. M.K. गांधी, B. ज्योतिबा फुले, C. पंडिता रामाबाई, D. B.R. अम्बेडकर. आंसर है B.R. अम्बेडकर.